Good afternoon. Who's back? Look what I have for you. Oh, ciao. The star of the show, of course. Always. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning. sir. Hello. Good morning. Good Hi. morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. पैरियत कौन लाऊगा? Morning. Why are you late? ट्रैफिक वो सीगा ट्रैफिक ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗਾ? Oh, he was driving, right? He was driving, of course. ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ And he just got his license? Okay. ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਯਾਦ ਹੋ Okay. ਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਰਾਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ Who's the best driver in Kirpa? Me? Oh, okay. All right. Yes. Sorry, Your Highness. उसके उससे बेस्ट कोई ड्राइवर पहली बार क्लियर कर लिया था और हम लोग 4 बार फेल हुए यहाँ बजट होता है दीदी फाइन के लिए 20,000 दिरहम फाइन के लिए Oh yes, she kept 2,000 dirham or 20,000? 20,000 दिरहम Really? Okay. एक मंथ में निकलते हैं ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 20000 ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ तेरी पंजाबी किसी ने नहीं समझ आई Look at her face. Subtitles are. मैंने कहा तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो लुक एट हर मूव चलो गाइस करें हम स्टार्ट सेंचुरी पे फोकस करते हैं हमारे पास 2 ये लास्ट यूनिट्स बाकी है जो एक्सक्लूसिव हमारे साथ है ऑन द पार्क 4 बेडरूम टाउन हाउस अगेन यू नो द प्राइस 3.99 मिलियन विच नोबडी हैज़ इन द एंटायर मार्केट तो एक बार क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं अगर आपका कोई भी क्लाइंट है जिसको जूम कॉल पे आना है देखना है मे बी यू कैन कॉल देम नाउ सिंस वी आर इन शोभाज ऑफिस हम यहीं पे उनको वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं मास्टर मॉडल है ना चले हाँ जी And we have 2 weeks left, guys. 2 weeks left to sell these 2 units. Whoever sells these 2 units, they have a surprise waiting for them. Oh yes. Who got the best surprise? What did you get? I got iPhone Oh yes. She got iPhone. Who else won iPhone or laptop? Well, now because it's harder than before, Yeah. we'll make the prizes better. Price better? Price is better, the gifts better. Rolls Royce? Who wants Rolls Royce? One townhouse. चाइनीज रोल्स रॉयस Chinese Rolls Royce जो गीतिका के पास है. I prefer cash if I do it Very nice. चलो let's start. जैसे आपको सबको वैसे तो पता ही है पूरा प्रोजेक्ट आप सब ने कुछ ना कुछ बेचा है इस प्रोजेक्ट में इट्स लोकेटेड ऑन अ लेन रोड विच इज़ 6 लेन हाईवे अराउंड 30 to 35 मिनट्स अवे फ्रॉम डाउनटाउन कम्युनिटी का साइज अराउंड 800 एकर्स है It's mix of townhouses, villas, apartments, and all the world-class amenities like lagoon, jogging track, cycling track, mall, hospital, schools on both the sides. So these are the basic amenities जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. आप in and out real estate जानते हो, you know what's Shobha will deliver. Quality, of course, we all know. And now coming back to the units which we have, those are in this cluster and on the last corner, not last corner. It's here, somewhere here, next to the pool. Next to the pool. Yeah. in the sun yeah you can share specific thing Yeah. We have exact unit numbers. So अभी 2 units बाकी हैं, तो दोनों we can sell. So and good thing is 3.99 million was the starting price और उसी price में हमारे पास park के ऊपर है. Most of the units which developer is selling now, those are not on directly on park. With same price or maybe slightly more, 50,000, 60,000 extra price. So remember, guys, we have 2 units left exclusively with Kirpa that are at the original price the community was launched at, which gives us a great opportunity to sell and somebody to buy as well, right? So let's focus on those 2 units. Make sure they're sold within the next 1 week. I'll give you 1 week. And then whoever sells them gets a prize, and I won't declare it right now. Me and Manpreet will decide today, and then all the best to you guys.
Who's gonna sell it, by the way? We are thinking to buy ourselves. Okay. No, who's gonna sell it? Who's gonna sell it? Everybody. Okay. All right. All the best. Let's see who wins. Let's see who wins the prize. Let's go. लिपिका गीतिका आप दोनों से मुझे बात करनी है एंड लेट्स गो. आप वेट करो, मैं आ रही हूँ. गीतिका एंड लिपिका, आपको पता है क्या हुआ है एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनप्रोफेशनल. आप दोनों को पता है और आप दोनों बहुत ही प्रोफेशनल हो एंड वाज शॉक टू सी कि आप दोनों ने ये सब कुछ किया. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि what went wrong. Why didn't you guys come to me before getting to that point जहाँ पे आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो? क्योंकि उसकी वजह से पता क्या हुआ, पूरे ऑफिस का कल्चर ख़राब होने जा. अदर पीपल आर गेटिंग इनटू ऑल दैट जोन. दे थिंकिंग कि वो हम भी ऐसे बात कर सकते हैं, जब बोल सकते हैं हमारे कोलीग्स के साथ. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट हैपेंड. I got this lead from the company and I was in touch with this client, and we had a very good conversation, and she was about to give her documents and check to me, and in between she told me that Gitika is already in touch with, Gitika is also in touch with her. So there came like, you know, a conflicting situation. So what I told the client, whether it is Lipika or Gitika, is the same thing, because we are representing Kirpa ultimately. So whether you give it to me or you give it to Gitika, it's the same thing, and allow me 5 or 10 minutes only. I'll discuss with Manpreet and get back to you. So within those 5 minutes, Gitika reached out to the client and took the documents and the check. So which was like, you know, I was working in a good faith wherein I was trying to secure both sides and the company. So it was kind of disheartening to me. And I wanted to discuss with Gitika and yourself, but I did not get time. And See, exactly. I know the situation. I know when this happened. You were wrong as well. And I won't say you were wrong because lead was officially assigned to you by me, right? And आपको लीड आई बट आपने आई थिंक CRM में नहीं डाली. देखो गीतिका, गलती आपकी भी थी क्योंकि लीड was came to me on my page and I assigned it to Lipika. This is how it works, right? जिसके पास CRM में लीड है उसी की डील होती है. And then client reached out to you directly on your social media and you didn't put that lead in CRM. So that's... Manpreet ji, before we come to a conclusion, I would at least want you to hear my side. And yes, there was a delay in adding the client's name to the CRM, but that does not mean I was not in touch with the client before. And once I tried adding it on CRM, the client had reached out to both, like it reached out on Kirpa's page also and my page also. And when I spoke to Navjot, उन्होंने clearly बताया कि ठीक है आप ये take over कीजिए. So Lipika was supposed to assign it to me, उन्होंने कभी assign ही नहीं किया. And बाद में road show के लिए भी मैंने register किया था client को, and she went for the road show. It could have been anyone. It could have been Vaishali also. It could have been Lovepreet also. It could have been anyone who went for that road show, and it would have been a conjoined deal which happened on the road show. And अगर so that's where I'm like, client ने खुद बोला था कि she was very clear. She told me that I've been in touch with you first and I'll proceed with you, but I just don't want you and Lipika to have a conflict which is happening now. I do understand my reaction was very harsh that time, but it was out of the blue. Suddenly it was accusing me, so I didn't mean to do that. I apologize, Lipika. It will not happen again. We want to work together because obviously we're looking long term. Very good. Thank you, Gitika, for being so mature and accepting that it was not a right move when you did that. And I think Lipika, you would agree the same. yeah, I would accept what she said, but it was very disturbing the day we had that conversation, and the actions were not appropriate, and I sincerely apologize to you for that, because it's just a deal. Deals will come and go, right? Thank you, but apologize भी नहीं कर रहे हैं. क्या गीतिका क्या बोला आपने? कुछ नहीं. You sure? Yeah. Okay. चलो, now this deal is mutually yours. दोनों की डील है, दोनों मिलके काम करेंगे. अगर कुछ complications होती है, instead of reacting, please come to me. Let's resolve internally instead of making such a big drama. And we everybody knows us. अगर आप outdoor जाके ऐसे ड्रामे करोगे, ऐसे fights करोगे, people will judge us. So we should not repeat such things. So let's get back to work. Yep. Perfect. चलो, before we leave, can we please shake hand? धन्यवाद. Thank you, Gitika. Thank you, Lipika. So drama like this happens in pretty much every single company, but we at Kirpa, because we want to take this company to the next level, we don't want this kind of thing happening all the time. We are hell-bent on making sure that everyone is working together, teamwork is there's a positive environment. We don't have time for any of that bullshit. Kirpa is a new company. We're only 1 year old. We're still learning a lot of things on how to
operate internally. Our work environment is very positive, but sometimes things like this happen, so we have to take care of it as it comes. And Manpreet is the best to do that. किरपा में हम ये सब पॉलिटिक्स बिल्कुल इनकरेज नहीं करते और किरपा इज़ वन टीम एंड वी ऑल वर्क टुगेदर। और बिजनेस में मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी भी एक तरफा कहानी सुन के किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमेशा दोनों साइड्स की सुननी चाहिए। एंड नाउ आई एम सो हैप्पी टू सी Gitika and Lipika together and I'm looking forward to see both of them a top performer and a best friends. I really adore Lipika. She's been 16 years in the market and I have a lot to learn from her. She's top seller of Kirpa. But कहते हैं बड़े हैं, but she didn't even apologize to me. I'm very proud that both Gitika and me, we are part of Kirpa Army. And Gitika is one of the biggest Instagram celebrities of Kirpa. But you know what? दिमाग से थोड़ी एड़ी है. You went yesterday to the event? नहीं नहीं Hi Vishal ji, how was your Sydney trip? Amazing, man. It was so good. Everyone was missing you though. Really, I couldn't travel this time. Yeah. There's always a reason. मैं ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਲੰਚ ਕਿਤੇ ਡਿਨਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਬੇਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾ। ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ओह थैंक यू। ओवरऑल ये बताओ कि सिडनी के शो का रिस्पांस कैसा रहा? Response was very good. We had around 60 visits or in 2 days. Apart from having this kind of situation, people are very much interested to buy in Dubai and we have a lot of good prospects. And 3.99 वाला फिर थानू पता पर कैश सर्च इसमें मैंने देना ही हाँ। आप भी खरीद लो। हाँ। अब मैं बेचूंगी। घर पे सब पैसे हैं। मैं बेचूंगी। ਨਹੀਂ बेचूंगी दोनों कमीशन आधी आधी कर रही भाई। इसलिए नहीं बात करूंगी। तुम लोग मिलके क्यों नहीं एक यूनिट खरीद लेते 2-3 लोग? हाँ। है ना? ये तेरे पूंजे पा दिया करेंगे। ये बाहर गैराज में सो जाया करेंगे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ इंत कर दें रखे हुए मैडम उन्हें बड़ा। तुम लोग कितना बुली करते रहे एक दूसरे को। मैं एक कोई गल करनी थी। हाँ। तुम ओके ओके तो जब मैं सिद्धि थी मेरे को लवप्रीत का कॉल आया था एंड वो षड्यंत्र चल रहा है इनके बीच में, लवप्रीत और प्रियंका के बीच में। ये एंटरटेन हो रहे हैं, बिल्कुल बोर हो रहे थे, कह रहे हैं नहीं इनकी लड़ाई करवा दी। वो टॉप परफॉर्मर्स है ना थोड़े से, तो लवप्रीत ने तुम्हें कॉल करके बताया सिडनी आया है मुझे वहाँ पे और बोला कि यार एंटरटेनमेंट है तेरे लिए कि वापिस आ। यार इन लोग वेले, इनको कुछ और काम नहीं है। So guys, are you confident you can sell the 2 units? Yes. हाँ जैसी मैं I have high hopes for you, Priyanka. You have sold the most. Thank you. Lovepreet, मैं दोनों बेच दूंगा मैं दोनों बेच दूंगा मैं पूरा बेच दूंगा। बेच दूंगा नहीं बेच दूंगी होता है। हाँ ओके ओके। क्या है मेल फीमेल? किसने डिसाइड किया? हाँ, किसने Oh, डिसाइड किया? sorry guys, I have a phone call. Okay, I'll come back. back to you. Okay. आपको सिडनी से कॉल आया? क्या सिडनी से कॉल आया आपको? मुझे? हाँ। हाँ उसका विशाली का आया था। क्या हुआ? आप कुछ बोला? अरे मैंने कुछ नहीं बोला, सच में ज्यादा कुछ नहीं बताया। बताया। विशाली बहुत तेज है यार, पता क्या है ये भाई भाई बोल के ना सब कुछ पूछ लेती है और उसके बाद इधर उधर बता देती है कभी मन पे। ऑलरेडी आपको वार्निंग दिया। पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया उसको सच में। मार डालूंगी आपको मैं। क्या मार डालूंगी यार? नहीं टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कॉफी पियो। मैंने कहा सेल्स वूल्स क्लोज कर, क्लाइंट से बात कर ले, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। कह रहा है कि जो मज़ा ऑफिस में है क्या मैम, मतलब यार, कितना अच्छा बचपना। माहौल है। लोग हमारे, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों से मिली हूँ जो हमें एडमायर करते हैं इस कृपा आर्मी कि हम लोगों में यूनिटी है, ये पता नहीं क्या चल रहा है। पहली बार हुआ है जब से हमने कृपा स्टार्ट किया, कभी मैंने ये सब ड्रामा नहीं देखा। एवरीबडी इज लाइक फैमिली, ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो ये इसके पीछे सारा ड्रामा इसी का, लवप्रीत का। एंड मैंने एक और चीज़ के लिए आपको थैंक यू करना था। व्हाइल आई वाज इन सिडनी यू वर ऑल द वे इन टच विद माय मॉम। उनको घर पे बुलाया, शी केम होम एंड उस दिन पता क्या, मैं भी अकेली थी, गोमा चली गई थी अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा मैं अकेली, आप अकेले, क्यों ना मिल जाते हैं। That was so cute. Thank you so much. बाकी मैम लवप्रीत से बात करो। This is not the way. No, of course, I'm gonna speak to him now. बचपना है ना, he's too young. तो दिमाग उसका दूसरी जगह पे ज़्यादा चलता है. But I'll speak to him. Thank you so much for letting me know. You're very, very. चलो, it's okay. ओके मैम आ रहा चल है, तो चुप टेंशन- करो आप। हाँ हाँ नहीं ऐसे भी। कॉफी कैसी है आपकी? हाँ ऑल गुड। Very nice. Very nice. Hi. चले? Yeah, let's go. We have to go back to the office, right? Yeah. And We have a iftar in the evening. दमैक जाना है guys सबको. Please dress your best. कंदूरा पहनना सब लोग. मैं He is wearing कंदूरा. हाँ. Anyway, ये अबाया लड़कियां पहनती है, कंदूरा लड़के पहनते हैं। तू बाया पड़ा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਢੋਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
डोलू क्या होता है पहले ये नहीं वो छोटे होते चा वो दूध में है ना मुझे तो पता है डोलू क्या होता है, इसको बताओ ना साउथ इंडिया को। यू नो डोलू one is steel the panda हाँ and with handle like this. you go small your mummy दूध लेके आ She does as in evening you get milk from the cow. Cow. no milk from the cow That cattle, you mean? no there is one steel बर्तन हाँ पता है मुझे. you take it and the गली ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ तो डल जाना. ਦੋ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਕੋਟ ਅੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ but yeah it everything will happen good baby no worries सब ठीक हो जाएगा जिंदगी में आप आया ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे. अच्छा होगा शुक्र कर मैं आ गई हूँ नहीं तो तुम मेरा कुछ कर ही रहे होते वहाँ सिडनी से आने का वेट कर रहे थे सब लोग तुम्हारा। ठीक हो रहा मैम वो सिडनी से आके कैसे बोल रही है ना, ये एक्शन चेंज हो गया ना इसका. सिडनी रिटर्न वो चेंज हो गया ना. कर तेन मुंह ला रही है ना शुक्र करया कर कराता चुप। वो कुड़ी है, मैं तारी कुछ कहना है. आहो मैं तो बड़ा कुछ कह लेना ही मुझे जिंदगी च उसको हिंदी समझ आती है, तुम लोगों की पंजाबी समझ नहीं। ये लड़के इसको इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं, हम यूं ही है वैसे ना. बड़ा ही मेरे को कुछ कह सकता है बता इसको प्रियंका कि मैं क्या बता उनमें से कोई थोड़ी पता है. तू बस मेरे साथ रहना है तूने कहना यस जब भी कुछ बात हो क्या यस ओके यस नो. हाँ यस नो बस इतना ही है तब तुम्हारा काम। बाकी जो कमीशन है उस पर मैडम बोले इसको देनी है तूने बोला यस मेरे को आधी आधी है। वो समझ आता है मुझे. समझ आता तेरे पैसों की बात समझ आती है मुझे। है. एक दिन मैं पूरा पंजाबी सीखूंगी, हिंदी भी सीखूंगी. This is what South India said. We are open to learn your languages, but what are you guys? We do फीमेल सेल कर रहा है. आपका लैंग्वेज बहुत with everybody. We do gitiku, labritu. We do it. अन्नड़ा जी. Labubu. लबूबू. My name is. तुम्हारे चक्करों में टॉय निकाल दिया हमने। Louis क्या? Louis Vuitton। Louis Vuitton. ये बोल डाला बैकलैश कर देंगे सब लोग. चलो हो गया। ग्रेट गाइस, ऑलराइट चले हम वापस ऑफिस। शाम को प्लीज अच्छे से रेडी होके आना, इफ्तार है एंड कल से हमारी छुट्टियां भी शुरू हो रही है ईद की। ओके चले, हाँ लेट्स गो। कॉफी नहीं सुवासती ना आज. अच्छा मेरी गाल सुन, इधर आ मेरी गाल सुन. हाँ। गल करनी बड़ा इधर. प्रियंका हम आते हैं. मेरी गाल सुन, मैडम ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ? ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੱਕਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਕਰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਕਰ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी बहुती ਬਣਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਮੋਲੀ ਕਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ. स्टार्क वाली आई लाइक योर सूट्स कलर। थैंक यू। अभी तो गर्मी शुरू होगी सो वी हैव टू लिटिल सेटल डाउन। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे आई गॉट टू नो कि यू गाइस वर प्लानिंग ऑल दिस जो हुआ गीतिका और लिपिका का, व्हाट वाज इट? ये क्या था? नदी में हम लोग कुछ नहीं किया. कुछ नहीं किया? आपने वैशाली को सिडनी में कॉल करके क्या बोला था? कुछ भी नहीं क्यों बोला था? आप मुझे विशाली ने बताया कि आपने उनको कॉल करके बोला कि यू गाइस वर बोर्ड बिकॉज देयर वाज नो बिजनेस एंड ये सब प्लान किया आप लोगों ने। इतना टाइम है तुम दोनों के पास कि ये सब करने बैठे हो और आप ऑफिस कल्चर खराब कर रहे हो। प्रियंका, लवप्रीत, क्या कर रहे हो? यू गाइस आर माय कोर टीम और अगर आप ही ये सब ड्रामे करने लग गए तो मतलब जो न्यू टीम आ रही है वो क्या करेंगे? दीदी हम लोग नहीं सोचा इतना बड़ा हो जाएगा. हम लोग थोड़ा से लाइक वी थॉट ऑफ टेलिंग यू. लवप्रीत ने आइडिया दिया, मैंने मीटिंग में बिजी था बट उन्होंने आके थोड़े से इम्प्रूवमेंट किया. हम लोग सीरियस हो गए दोनों. हम लोग दिस इज नॉट राइट। आप सॉरी देखा कितना कुछ हुआ है एंड सो एवरीबडी सॉ दैट एंड दे बोथ हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। जब आप दोनों को क्लैश करने की सोच रहे हो आपको पता है ना क्या होने वाला है। सो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स, बी मैच्योर, काम पे फोकस करो, अपनी डील्स पे फोकस करो, क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करो। व्हाई डू यू हैव टू गेट इनटू ऑल दिस nasty पॉलिटिक्स? यू नो वी आर सच अ गुड टीम, सो पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड एक आप दोनों के एक मजाक की वजह से इतने कुछ प्रॉब्लम्स होगी और अभी भी उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट बट आप दोनों की सब की वजह से ना वो अभी भी एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दे गेट बैक टुगेदर अगेन
they become best friends. So you have to sit with them and apologize to them as well. Okay? Okay, दी. ठीक है. Please आगे से ये सब नहीं करना, काम पे ध्यान दो. Okay, Priyanka. हाँ, See you in the office. Bye-bye. बच्चे. Bye-bye. See you in the Take office. care. Yeah. Okay, Gitika. Bye. See you in the office. Okay. Okay, ma'am. Bye bye. See you. Babe, what is the update on Kirpa's Sydney office? So look, we already started the paperwork. We have to set up the company. We're in the middle of setting up the company. So by next week, the company should be registered. Then we have to get a broker license, Okay. which I'm talking to a few people on how to make it expedited. So we can Okay. have the broker license within maybe 2 weeks or around 2 weeks time. So then we'll be operational. All we need is an office, which I think we should go there and find a good space, visible space. I already checked out a few locations, so we'll see, Okay. We'll have to go to Australia. So me and you will go to Australia. कब plan करें फिर? I think Advance में plan करते हैं ना because in then the next 3 weeks. okay. Once the company is registered, then I know, okay, that we're confident we can go there and get the things done Okay. and sign the papers. Done. So the apartment we're going to check out today is a 1-bedroom apartment in a building called Bellevue Towers in downtown Dubai. It's a 877 square foot internal area. Like I said, it's a 1-bedroom, 2-bathroom apartment with 877 square feet of internal area. Manpreet actually bought this 2 years ago for about 1.5 million, and she had rented it out for about 110,000 dirhams a year. Now we have agreed with the tenant. We had agreed with the tenant to basically let them go so that we can sell the apartment. This way on left corner unit. Corner unit, you remember it? Yes, of course. Okay. You do the honors? Are you ready? Yeah. Are you guys ready? Oh, let's turn on the AC. Wow. Let me turn on the AC. These curtains were done by me. You know that? No way. I did these curtains. But with- tenant ने बहुत nicely रखा. देखो curtains वगैरह सब as it is there. The tenant Yes. was one of they were so nice. Yes. कभी कोई problem नहीं आई थी tenant से. And it's not a bad view if you think about it. It's a really You have a good water view. on this side, you have a park on this side. It's a very nice view. This 1-bedroom, what is it? 877 square feet. Yeah, and You it's have the in bathroom. downtown. And we have more water view. Oh, great. The water canal view. Can you see our office? No, we You can't. it's right behind this building. You know that? Yes. Right behind this building. So, babe, what do you think about this apartment? Do you want to sell? You would want to rent? The tenant was renting it for 110,000, which is okay. For a 1-bedroom, downtown's relatively fine, but the rents were 130. That's why no investor was buying this from us. So I'm thinking sell it, 1.55, move the cash somewhere else, and then we'll see what we can do. Yeah. What we can buy, because there may be good opportunities now. Done. Let me work on, I'll get it listed, and then, if we get a good offer, if we get an offer at 1.55, great. If we don't within maybe 1 or 2 months, Okay. then let's rent it out. Sure. Let's do that. But you So know, tell me more about the unit. you know more about this unit more than me. Okay, this is the living room area, of course, and then you have a Kitchen. semi-closed kitchen. Yes. What I love about this kitchen is it's semi-closed. Perfect for Indian families because it's closed. In Dubai, it's very hard to get closed kitchen, and especially in downtown. And you can open the window. You can open this. It has nice view, open view. Yeah. Great. Good for And, ventilation. Yeah, so it's really nice. I like the kitchen क्योंकि हम Indians के हैं ना बहुत तड़के शड़के लगाते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है. Yes. So that's why I like the kitchen and a lot of storage. Yeah. You see all around. Then we have powder room here with the sink, and then we have a master bedroom with attached washroom. And this also I did. I remember I wanted to furnish it and I wanted to put it on holiday home. Yeah, And then I thought about living myself. So Yeah. I started doing renovation. I remember. So start ही किया था, सिर्फ यही किया था, तब तक
सब कुछ. No, it's good. It adds to the feel of the unit. Like it makes it more premium looking. Yeah. Right. Go back to office. So let's go. I'll get it listed for sale. We'll see if we get our price. If we do, great. Then we can sell it, move that money somewhere else. If not, in 2 months, we'll rent it out. Okay. एक बार amenities देख लें जाने से पहले. Sure, let's go. Okay. Apartments in Dubai are more valuable when they're vacant than tenanted, especially if the rent is lower than what the current market is. So we had rented it for 110,000, but nowadays the rent was around 130,000, let's say a couple of months ago. So because of that, now we've agreed with the tenant, we paid them some money, compensation to move out, and now we're going to go today to inspect the property, make sure that it's in great shape so that we can list it for sale. It's a 1-bedroom, 2-bathroom, 877 square foot apartment in a building called Bellevue Towers, which is only 5 minutes away from the Burj Khalifa, the tallest building in the world, and the Dubai Mall. So it's a very good location. We bought it for 1.5 million 2 years ago, and we rented it for 110,000. Now, since the rents went up, we agreed with the tenant to move them out. We compensated them so that we can empty the apartment and then sell it to an end user or homeowner. So yeah, that's kind of our plan. We're going to go there today to inspect it, make sure that it's in great shape so that we can list it properly for sale. ये घर मेरे दिल के बहुत करीब है. उसका रीज़न है ये मेरी लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट थी, पहली प्रॉपर्टी थी और मैंने ख़रीदा था 2023 में. दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. आई एम इमोशनली अटैच्ड टू दिस प्रॉपर्टी. मेरा इस घर को बेचने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे री इन्वेस्ट समवेयर एल्स. वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन दुबई. वी हैव ऑलमोस्ट 6 to 7 units, villas, townhouses and apartments. But this one is more special because it's my first property. And पहली प्रॉपर्टी हमेशा स्पेशल होती है. उसके बाद तो चाहे आप 10 प्रॉपर्टीज भी खरीदो, 1000 भी खरीदो, it cannot match the same feeling. So anyways, let's see how it goes. I'm open to new offers. अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है, I don't mind selling. But yes, this house has my heart. It is so good here. Windy. Oh yeah, it's much better than downstairs. I know. Peaceful, huh? Much peaceful, much more peaceful here. I think with everything going on, this is a really nice place to sit. Good. चलो, let's go to office. Plan. Late हो गया. Yeah. Good. We have to announce few deals because we have closed couple of deals in last. Awesome. Hello, good Hello. morning. 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 Morning, morning. Good morning. Good morning नहीं, good afternoon हो गया. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I just wanted to announce few deals because since war started, so we have done really well, as I mentioned on WhatsApp, that we have closed almost 6 to 7 deals. So that shows that market is still very active. Smart investors are still buying. So I wanted to announce, so our Lipika has closed 2 deals, 3-bedroom apartment in Shobha Central and 1-bedroom apartment in Dubai. Wow. Congratulations. Thank you. Thank you. Wow, what an incredible job, Lipika. Bella. आप करो. Up, please. Congratulations. This client was from US and उसी ने मुझे कहा कि दीपिका, why you are spending so much time when the client is saying I have no plans and I don't know even if I'll buy or I don't buy. तो ऐसी डील्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. क्लाइंट के साथ मेरी बात हुई कोई 1.5-2 घंटे कॉल पे एंड I was like totally blank कि लेगा नहीं लेगा कोई बात नहीं, but just give it your best shot. 3 days I've been out in the market with the client. The client has been very patient. He is not believing in today's Dubai. He has seen Dubai grown. He has seen Dubai's history. And then client knew that whatever investment he is making, it is in future Dubai again. Our Priyanka and Gitika has closed 1 bedroom in Shobha Central. Congratulations. एक करके. Again. Amazing. So Gitika and Priyanka, you have done this deal jointly. So why don't you tell us what did you close? How did you close? Yeah, they came for a meeting in our office. I was waiting for them till 8 o'clock. Then they came and we just had one discussion. Then they flight back to India. And next we had one more meeting and they closed 1 bedroom in Shobha Central. Very well done. Gitika, give one advice to all our investors who are worried about current situation and feeling scared to take a decision.
I think, like, again, based on the history of Dubai, like you said, Dubai has always proven its economy. If this was any other place, any other countries where so much attack is being done, where we are not even involved, it would be a totally different situation. But our investors are trusting us and we trust the government. That is what keeps us keep on going. And other than that, it's all about how you communicate to the client and how you show the reality as much. Because if they're sitting in another country and seeing the news, obviously I would also get scared. So most importantly, we have to show them the reality and be a friend first, more than a agent. Absolutely. No, very well done. Yeah. Congratulations, both of you. Congratulations. Congratulations. Another deal, 2-bedroom. Sahil closed, but Sahil is in meeting. So मैं मार देती हूँ bell. Sarv has closed a studio apartment in Danube. Congratulations, Sarv. Tell us about your deal. So it's a existing client. He already has a unit in Danube before. This one, he booked it right when the war started. So he just paid 2% on 27th. So he paid the rest amount, like more 5%. Then when they announced the DLD waiver, 4%. So I explained him, told him, then he completed around 17% of the payment. So he got 4% DLD waiver Yeah. And when it started. yeah. Wow. Still active. There are smart buyers who are still buying properties. You know, it's our responsibility to educate them, give them right numbers. Jay ने I think 3-4 दिन पहले एक presentation दी थी. Are we using that presentation, the real facts? Because जो मीडिया में दिखाया जा रहा है दुबई के बारे में, that's not the reality. We all know that. We live here. We come to office every single day. So you know कि ground पे क्या हो रहा है. And we are the best people to educate our clients because we've been living here for years and years. तो आपको brand ambassador बनना पड़ेगा दुबई का इस time पे, ठीक है? So educate your clients. So our deal shows that market is still active. Yes, there are a lot of investors who are on pause, which is normal. अगर मुझे भी invest करना है, मैं भी थोड़ा सा सोचूंगी ऊपर नीचे. But अगर मुझे best deal मिल रही है, best payment plan, why would I wait? क्योंकि यही time होता है जब investors wait करते हैं. So all the best guys. So अगर किसी का भी कोई भी सवाल होगा resale, off-plan resale का या ready resale का, come to me, go to Jay. अगर आपको कोई भी प्रोसेस में कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, आपको समझना है, प्रोसेस नहीं समझ आ रहा है, we'll show you step by step. Once you complete 1 or 2 transaction, you'll do it on your own. But पहली second transaction resale में थोड़ी सी difficult होती है क्योंकि paperwork बहुत ज़्यादा होता है. Okay, all the best. Today we're going to go through secondary sales, right? We're going to look at how secondary sales are done, what the documents you need are, right? What documents you need to request, how to verify those documents. That's also very important. Okay guys, I hope you understood what I did in the presentation. These skills are going to help you overcome your fear of doing secondary sales. And for the people that haven't done any, this is the time to get started. So today we have an iftar party with Damak, and that's going to be an amazing event. So I want you all to dress up in Arabic style today, yeah? And let's go have some food, let's have some talks, let's figure out what's happening in the market, let's talk to other agents as well. So we're going to have a fun time tonight. Make sure you're dressed well, and let's enjoy.